All right. So as we know, we're going to be talking specifically about general writing because that is more applicable to your case. Yes. So there are two types of tasks that generally come in your general writing module. Task one is letter that has to be done in 20 minutes, and task two is essay writing that has to be done in 40 minutes. Yes. So we have already shed emphasis on task two. In this lecture, we're going to be focusing more on task one. What are the do's and don'ts? What's the structure of letter writing? What are the band descriptors? What are the different factors that you need to own into consideration, and how what additional pro tips you can basically embrace to get a maximum balance load. Okay, this is going to be a lengthy lecture. Okay, as you can see, 11 pages, right? So obviously there's going to be a lot of content that we are covering. So before I begin, मैं आपसे शुरू में अर्ज करूंगा कि whatever questions you have, साथ साथ मुझसे please पूछते रहिएगा. ठीक है, जो चीज नहीं समझ आ रही मुझे रोक के मुझसे पूछते रहिएगा. ठीक है जी. So that being said and done, first of all, before we talk about the letter in context of the IELTS syllabus, we need to look at the general definition of a letter. उर्दू जुबान में लेटर को आप क्या कहते हैं? खत. ठीक है जी. खत क्या होता है? So a letter is a written, typed, or printed message containing information that is sent in an envelope via a post or messenger from one party to the other. ठीक है. पुराने ज़मानों में before telephones came, before mobiles came, before other communication devices and outlets like emails popped into existence, right? Basically, आपके पास ये traditional means होते थे, ठीक है, खत वगैरह. The role of letters in communication has changed significantly since the 19th century. Historically, letters were the only reliable means of communication between two people in different locations. एक साहब ईरान में बैठे, दूसरे साहब जब ऑस्ट्रेलिया में बैठे, तो वो खत के जरिए correspondence करते थे. Obviously, it was a slow process. It took a long time for the message to reach from one party to the other, and there was a very high prospect of the message being lost or distorted, because of the long distances that we have to travel. Okay, so now, like I said before, obviously, whatever you do in IELTS, okay, be it the letter, be it the essay, be it something else, it will always be judged on certain criteria, okay? So we have band descriptors, okay? Band descriptors are the parameters upon the basis of which your essay is evaluated and scored. So when you write a letter, there's certain areas in which you're going to be judged, okay? If you do justice to those areas, the chances are high that you're going to get a very good score. But if you don't do justice to those areas, you're going to have marks deducted from you. जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि आपके 4 band descriptors होते हैं, each band descriptor is assigned an equal weightage of 25%. Okay, जो band descriptors आपके essay के हैं, you have the very same band descriptors for letter writing as well. Okay, so once again, in this case, you have 4 band descriptors. The first one is task response, how much your writing answers each part of the letter prompt. In this case, because we have to modify it for the regard to letter. So, for example, let's say there are 3 bullet points when it comes to the letter question. Okay, आप उन 3 में से 1 या 2 bullet point को mention करते हैं, तीसरे के बारे में नहीं लिखते, तो क्या होता है? आपका letter incomplete होता है. If your letter is incomplete, it basically means, Rizwan Sahib, that your task response or your task achievement band descriptor has not been justified. Okay, and like I said before, you have to be very careful because out of these 4, if you fail to justify even one of the 4 band descriptors, you won't get a score of more than 5 out of 9, okay? Which is very, very risky, which is a very risky proposition for us, okay? So number 1 is task response or task achievement. To what extent you have answered all parts of the question. Number 2 is cohesion and coherence. That is connection of ideas at the sentence level as well as at the idea level, okay? मतलब के the words that you use in a sentence should not contradict each other. For example, एक जगह आप कहते हैं कि doing this job makes me happy. अगले sentence में आप कहते हैं doing this job makes me sad. Okay, so like you are contradicting yourself. Okay, similarly आपके ideas जो हैं वो एक certain sequence में आने चाहिए. Likewise, 3 bullet points given है. पहले bullet point के ऊपर पहला paragraph होगा. अगर आप पहला paragraph start करेंगे तीसरे bullet point से, फिर पहले से, फिर दूसरे पे आएंगे. So what is happening is you are disrupting the sequence. You are spoiling the flow. You are dumpstering the whole momentum. Okay, therefore आपने cohesion and coherence band descriptor का ख्याल रखना है. तीसरी बात, lexical resource, that is range of vocabulary exhibited in the essay. Okay, so I'm a spendthrift, I'm a prodigal person, I'm a profligate, I spend recklessly. ठीक है, जो फजूल खर्ची बहुत ज्यादा करते हैं, right? ये मैं different मैंने आपको इसके synonyms बताए हैं. So obviously you have to make sure you establish a wide range of vocabulary. और अब आपको समझ आएगी कि ये जो मैं हर lecture के बाद आपको थोड़ी सी drills भेजता हूँ, ये जो हो गई आपकी words, spellings, idioms, इनका फायदा कहाँ आ रहा है. So I really hope, Rizwan, that along with understanding these lectures and practicing, you're also going through that
vocabulary list. Okay. Thirdly, you have we've talked about the third one. Let's look at number 4. Okay, GRA, grammatical range and accuracy. That is demonstrating confident and accurate sentence construction. Okay, making sure that you use state-of-the-art complex sentences which look aesthetically appealing as well as professional at this level. I believe मैंने आपको जब हमने ऐसे की बात की थी तो हमने I gave you a lecture, you know, about how to join simple sentences, how to write complex sentences. Yes, how to use examples and all. अगर आप अपने notes में check करें तो आपको वो चीज़ वहाँ given होगी. So once again, people ask me that, Mr. Nasir, what are the ingredients of a good high-scoring letter? And I say that is the one in which, number 1, you have addressed all parts of the question. Number 2, your ideas and sentences do not contradict each other. Number 3, you use a big range of vocabulary. And number 4, you use complex and professional sentences. Okay. So bottom line, if you are doing justice to the 4 descriptors of task response, cohesion and coherence, lexical resource, as well as grammatical range and accuracy, then chances are high that, God willing, you'll get a good band score in your level. Yes? So far, this is the basics, okay? We have looked at the definition of the letter as well as the band descriptors. Now, what are we going to be doing in this lecture, okay? In this lecture, we'll be doing number 1, how to analyze a task 1 question. एक क्वेश्चन आता है लेटर के ऊपर, सबसे पहले हमने उसको एनालाइज किस तरह करना है, रफ स्केच किस तरह करना है, एक ड्राफ्ट किस तरह बनाना है, how do you make a preliminary draft, basically how do you plan the letter, right? Anything you do in life, you need to have a plan. You know, there's an old saying in life, fail to plan, plan to fail, right? So हमने plan किस तरह करना है इसको सबसे पहले. So how do you make a plan? It's a nice of plan बनाना है, लेकिन at the same time, how do you make a plan that will save you lots of time and boost your score? Because time management is very important. जितने भी ideas आपके पास हो, you will always be at the top. Number 3, we will generate a quick checklist, the do's and don'ts, right? क्या क्या चीजें करनी, क्या क्या चीजें नहीं करनी. और finally, हम एक sample band 9 answer को देखेंगे, लेटर को देखेंगे that scored a band 9, okay, in the IELTS exam, और हम देखेंगे किस basis के ऊपर उसने band 9 को score किया. Okay, so this is what we'll be doing in today's class. So far, so good. Can I move on? Okay. Next up. Just you have different types of essays. At the same time, you got different types of letters in task 1 of the general writing module. Okay. So number 1, Rizwan Sahab, you have formal letter. Okay. What is a formal letter? Formal letter is a letter that is written for ये जो आप office use में मुंह में जो आप खत लिखते हैं. The formal letter is written for business or professional purposes with a specific objective in mind. It uses simple language that can be easy to read and interpret. Number 2, you have an informal letter. Okay. अच्छा, फॉर्मल लेटर में एक चीज याद रखें, चूंकि आप एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेटर लिख रहे हैं किसी अपने सुपरवाइजर को, अपने कॉलीग को, किसी काम के हवाले से, तो इसमें कोई शुगर कोटेड फैंसी वोकैबुलरी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इट शुड बी प्रोफेशनल, इट शुड बी यूज सिंपल लैंग्वेज आपने यूज करनी है. और जैसे जो लैंग्वेज मैंने अपने एसेस में यूज किया, होपफुली आपने वो लैंग्वेज नहीं लिखनी, सिंपल लिखना है. ओके. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, रिजवान, इट शुड बी to the point. Okay, it should be relevant, because at the workplace, right, you have to come across lots of documents. Okay, you have to read lots of letters. Okay, so it has to be very, very relevant as well as to the point. It should be easy to read and interpret. Number 1. Okay, this is what you need to understand in regards to formal letters. The formal letters को किस तरह हमने simple language में लिखना है, किस तरह structure करना है, वो आगे जाके देखेंगे. फिलहाल मैं आपको basically overview दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है. ठीक है. Number 2, आपका क्या आता है, इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर हुआ है जो आप अजीज को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त से बाप को आप लिखते हैं. ओके. दे आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ कैजुअल और एन इमोशनल टोन. ओके. कैजुअल और इमोशनल टोन का ये मतलब नहीं है कि आप एथिकल लिमिट्स क्रॉस करें, लेटर में गाली गलोच हो या इधर उधर की बातें हो. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो उतना फॉर्मल नहीं होना आपने, बट द सेम टाइम सर्टेन वर्ड्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. ठीक है. Semi-formal letter, as the word itself says, is something in between. So it's a hybrid, you can say. It's a mixture, it's a synthesis, it's a combination, it's an amalgamation, right, of the two. Formal or informal के दरमियान हुआ है. ठीक है. So a semi-formal letter is one that is sent to someone you know, but you do not share a cordial relationship with.
ठीक है, कॉर्डियल का क्या मतलब होता है? फ्रेंडली रिलेशनशिप में, मतलब किसी को आप लेटर लिख रहे हैं जिनको आप जानते नहीं, लेकिन एट द मतलब सॉरी, जिनको आप जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जिनको आप जानते हैं, बट द सेम टाइम यू डू नॉट शेयर अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, ठीक है। अब वो कौन कौन सी वो कैटेगरीज आती हैं जिसके अंदर आप किसी को जानते हैं लेकिन आपकी उस बंदे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, हम आगे जाके उसके ऊपर मुलाहिजा फरमाएंगे, ठीक है जनाब। सो इट कुड ऑल्सो बी समवन यू नो इनफॉर्मली, लेकिन जो राइटिंग अबाउट अ फॉर्मल और सीरियस सिचुएशन एट वर्क, फॉर एग्जांपल आपके कोई दोस्त है जो लेट से किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और आप उनको खत लिखना है कि आप एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आप उन्हें इस गाड़ी के बारे में स्पेयर पार्ट्स की मालूमात हासिल करनी है, लाइक अलॉय रिम्स, इंजन साइज, व्हाटएवर, ब्रेक ऑयल एक्सेट्रा, राइट। तो आप हैं तो कहने को आपके दोस्त, लेकिन आप काम के हवाले से बात करें, तो ऐसे केस में लेटर क्या बन जाता है? सेमी फॉर्मल लेटर, ठीक है। सो किन केसेस में लेटर सेमी फॉर्मल होता है उसको भी हम आगे जाके देखेंगे, बट फॉर द मोस्ट पार्ट उस्मान, फॉर द मोस्ट पार्ट आइल्स के जो सिलेबस है उसमें या तो आपका फॉर्मल लेटर आता है या इनफॉर्मल लेटर आता है। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोना टेक एनी चांसेस, वी आर नॉट गोना टेक एनी रिस्क्स, वी आर नॉट गोना लीव एनीथिंग टू चांस, तो ऑब्वियसली मैं आपको सेमी फॉर्मल लेटर भी कराऊंगा, लेकिन ज्यादा एम्फोसिस हमारा जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पे होना चाहिए, ठीक है जी। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो अब आगे हम डिटेल में देखें। अभी तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया ना कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, तो आगे हम देखते हैं। The following table summarizes all the main differences between formal and informal letters in a detailed manner. Okay, so एक कंपैरिजन चार्ट। अब सबसे पहला बेसिस हम देखते हैं मीनिंग, मतलब क्या होता है। जैसे मैंने ऊपर ऑलरेडी स्टैब्लिश हमने बात की, अ फॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज इन द स्टिपुलेटेड फॉर्मेट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, whereas an informal letter is written in a friendly manner to someone with whom you are familiar with. Okay, secondly आता है आपका objective, मकसद क्या है, what is the purpose. Okay, so in formal letters your objective is professional communication. Yeah, in formal letters your objective is professional communication, whereas in an informal letter your objective is personal communication. Yes, तीसरी बात फॉर्मेट, किस तरीके का, क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, लेट्स से कोई एकेडमी, आपने वहाँ एडमिशन लेना है कोई कोर्स करने के लिए, कोई सेशन में एनरोल करने के लिए, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, राइट। उस फॉर्म का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ आपने नाम लिखना है, यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ आपने ईमेल एड्रेस लिखनी है, you gotta mention your past qualifications here, you gotta document your work experience, okay, you gotta talk about your hobbies, you gotta talk about the times in which you're available, you gotta talk about which fee plan you're comfortable with availing, ठीक है। तो एक फॉर्मेट होता है। सिमिलरली फॉर्मल लेटर में एक सर्टन आपका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, कि इस तरीके कार से आपने लिखना है। हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्मेट आपका वेरी करता है, लेकिन फॉर्मल लेटर में आपने एक गिवन सीक्वेंस के मुताबिक चलना है, अपने तरफ से कोई नया सीक्वेंस आप इनोवेट नहीं कर सकते, ठीक है, फैशन नहीं कर सकते। सो अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली, जबकि व्हेन इट कम्स टू इनफॉर्मल लेटर देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है जी। अब उसके बाद फॉर्मल लेटर किस में लिखे होते हैं। अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, ओके, आई, वी, ओके। सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है आपका, दे, देम, ठीक है। सो आगे जाके हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। सो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टिपिकली इन द फर्स्ट पर्सन, ओके, बिजनेस लेटर्स, ओके, जबकि इनफॉर्मल लेटर्स अमूमन लिखे होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन पे, ठीक है। कभी कभार फॉर्मल लेटर्स आपके थर्ड पर्सन में भी यूज हो जाते हैं, बट वंस अगेन दिस समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट आफ्टरवर्ड्स, ओके। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन बेसिकली क्या होता है। उसके बाद फॉर्मल लेटर्स किन लोगों को मुखातिब किया जाता है। A formal letter can be written to a business, to a college, an institute, employer, or organizations, etc. Whereas an informal letter is written to friends, family members, acquaintances, etc. Okay? आगे आगे आता है passive or active voice. A formal letter is written in a passive voice, whereas an informal letter is written in an active voice. Okay? Once again, we will talk about this passive or active voice क्या होती है आगे जाके। फॉर्मल लेटर इज के लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जैसे हमने पहले अपने ऐसे की क्लास में बात की, ओके, सेंटेंसेस दैट आर मोर प्रोफेशनली अपीलिंग, ओके। जबकि इनफॉर्मल लेटर में जनरली यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। A formal letter is concise. Concise means to the point, no extra details, okay, because obviously everyone is under a timeline or deadline, everyone has to follow the clock at the end of the day.
जबकि informal letter, okay, it can be large or it can be concise, that is to the point, okay. Informal letter में there is room for both types of possibilities, okay. Contractions क्या होता है? Instead of saying my name is Rizwan Azhar, you say my name's Rizwan Azhar. NAME apostrophe comma S. समझ रहे हैं बात? Okay. Okay. Let me wait. Just a second. Let me share it with you in the chat. So I say my name is Hamza Nasir. My name is is Hamza Nasir. This is the normal version. Okay. इसमें कोई contraction नहीं आ रही. अब इसको देखें आप चार्ट में. My name's Hamza Nasir. Okay. अब आप नोट करें नेम के बाद कॉमा आया और कॉमा के बाद एस आया. ठीक है. इसी क्या कहते हैं? My name's Hamza Nasir. Okay. My name's Hamza Nasir. So ये जो है my name's Hamza Nasir, इसे क्या कहते हैं? Contraction or high level pronunciation. Yes? इसे हम क्या कहते हैं? Contraction or high level pronunciation, HLP. ठीक है जी? तो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है रिजवान साहब, ये आप फॉर्मल लेटर में हर हाल पे अवॉइड करते हैं. सो इन द फॉर्मल लेटर, इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अ सर्टेन organization or business or employer, you will say, good afternoon, I hope this finds you well, my name is Rizwan Azhar. No contraction. जबकि आप कॉन्ट्रैक्शन जो है फॉर्मल लेटर्स में यूज करते हैं. ठीक है. लाइक माय नेम्स रिजवान अज़हर. एब्रीविएशंस, ठीक है ना, उसको फॉर्मल लेटर में हर हाल में अवॉइड करना है, जबकि इनफॉर्मल लेटर में आप यूज कर सकते हैं. लेकिन एब्रीविएशंस भी स्टैंडर्ड एब्रीविएशन होनी चाहिए आपकी. ठीक है ना. लाइक एआई, दैट इज द इंटरनेशनल एब्रीविएशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक हो गया. उसके साथ साथ आपकी UX, that is the international abbreviation for user experience. Okay. Then you have ID, that is the international abbreviation for information technology. Okay. ये जो हम पाकिस्तानी खुद एक abbreviation हर चीज की बनाते हैं ना, कि यूनिवर्सिटी को यूनी कह दिया, बायोलॉजी को बायो कह दिया, केमिस्ट्री को केम कह दिया. ठीक है ना. ये एब्रीविएशंस काउंट नहीं करती. ठीक है. तो हमने इस चीज का बड़ा खास तौर पे ख्याल रखना. ठीक है. So बेहतर यही, अगर इसको अगर नहीं श्योर है, if you remember the golden rule, be it IELTS or any other test in your life, अगर आप श्योर नहीं है आप उसको अवॉइड करें. ठीक है जी. अगर आप श्योर नहीं है तो आप उसको अवॉइड करें. ओके. सो ये समझ आ गई है आपको. ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपके. These are the different parameters: meaning, objective, format, written in, written to, voice, sentences, size, contractions, abbreviations, जिनके बेसिस पे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. ठीक हो गया. So the first thing you need to do is decide if the question is actually asking you to write a formal or informal letter. ठीक हो गया. The first thing you need to do is decide if the question is actually asking you to write a formal or informal letter. ठीक है. We can tell this by checking whether if you know the name of the person we're writing to or not in the situation. Okay. अब एक बड़ा सिंपल रूल है. अगर आपको बंदे का नाम ही नहीं पता जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, तो if he is unknown to you, obviously he's not your friend, obviously he's not your family member, obviously he's not your acquaintance. Therefore informal letter तो नहीं होगा, तो automatically आपका वो formal letter बन जाता है. ठीक है. So for example, it's very logical. For example, if we are writing a letter of complaint applying for a new job, अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और resigning from our existing job, it will always be formal. ठीक है. Also, if we do not know the name of the person, वो ऊपर जितने भी आपको पैरामीटर्स दिए, उसके अलावा अगर आप उन साहब का नाम ही नहीं जानते जिनको आपने खत लिखना है, then your letter will always be a formal letter. Okay. Letter will be a formal letter. अब चलिए चले, मैंने आपको different pointers बताया ना कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है formal letter को. अब नीचे थोड़ी सी मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दी हैं. हम एग्जांपल्स को अब देखते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये फॉर्मल लेटर है या फिर आपका इनफॉर्मल लेटर है. ओके. सो लेट्स गो नाउ. So we're going to take a look at the 4 example questions below and decide whether they're formal letters or informal letters. Okay. First example. On a recent holiday, you lost a valuable item. Fortunately, you have travel insurance to cover the cost of anything lost. Write a letter to the manager of your insurance company. Describe the item you lost. Explain how you lost it. And tell the insurance company what you would like them to do. Okay.
क्या लगता है आपको, ये फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? क्या लगता है आपको, फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? You're muted. I can't hear you, bro. You're muted. You're muted. You know, you've muted your सॉरी 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 hours. क्या लगता है आपको, फॉर्मल फॉर्मल होगा? जी जी, फॉर्मल होगा बिकॉज वी डोंट नो हु इज द मैनेजर वी डोंट नो एग्जैक्टली। जी और ऊपर से एक इम्पोर्टेंट काम के हवाले से आप बात करें, वैसे आप जी you're not chit-chatting. लगेज बिल्कुल शाबाश, सही आपने आइडेंटिफाई किया, दिस इज अ फॉर्मल, वेरी गुड रिस्पॉन्स। सेकंड एग्जांपल, you were working for a company, आप एक कंपनी में काम कर रहे थे। Now you need to take some time off work and want to ask your manager about this. Write a letter to your manager. In your letter, explain why you want to take time off work, give details of the amount of time you need, suggest how your work could be covered while you are away. ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये सेमी फॉर्मल है? एक सेकंड, सेमी इससे फॉर्मल पहले सर कि आप, वेरी गुड, इससे पहले कि आप हम आगे चलें, याद रखें, a semi formal letter is one that is sent to someone you know but you do not share a friendly relationship with, and you're writing about a serious situation such as work. तो आपके मैनेजर, जिस कंपनी पे आपने काम किया, अगर आपने काम किया तो ऑब्वियसली आप अपने मैनेजर को भी जानते होंगे, तो बिल्कुल आप उन्हें पर्सनली जानते हैं, लेकिन ही इज योर मैनेजर, ही इज नॉट योर बडी, राइट? On top of it, you're talking about a serious situation such as work. Okay, so बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा आपने कहा, ये सेमी फॉर्मल की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। You were hurt in a minor accident inside a supermarket and you wish to complain to the supermarket. Write a letter to the manager of the supermarket. In your letter's first bullet point, say who you are. Second bullet point, give details about the accident. And the third bullet point, suggest how the supermarket could prevent similar accidents. Okay? So, अब बताएं, what do you think? Is it going to be formal, informal? Take your time. सर ये मेरे लिए इनफॉर्मल है आपके लिए क्या है? इनफॉर्मल Informal. Okay. जी बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी Okay. Think, नेसेसरी मीन्स कि एक हम कंप्लेन कर रहे हैं किसी को ठीक है ना इनफॉर्मल सर informal. वैसे It is, फॉर्मल है मगर इनफॉर्मल कंसिडर करूंगा हाँ, it is a formula. Like I said, देखिए, क्या आपको मैनेजर साहब का नाम पता है? अब लेट्स से, नहीं नहीं पता, मैनेजर साहब का कोई नाम नहीं पता। दूसरी बात, आप क्या उन्हें आप क्या उन्हें किसी चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं, उनका वैसे हाल चाल पूछ रहे हैं, कोई आपकी वो बचपन के दोस्त हैं? नहीं। क्या आप किसी वैसे सोशल टॉपिक के ऊपर बात करें? नहीं। आपने उनसे कभी मुलाकात या बात ही नहीं करनी थी अगर आपका खुदा न खासा वो एक्सीडेंट ना होता। ठीक है, तो the only, first of all, you do not know his name, Rizwan. Okay. Secondly, you're only reaching out to him because at his workplace, an accident happened which affected you negatively as a customer, as a consumer, as an availer of that company's respective product or services, right? Therefore, since it's a formal situation regarding work, and since you do not know the person to whom you're addressing this letter, ये आपका जो है, it will come under the category of a formal letter. Okay? ठीक है, तो हमेशा याद रखें, if you do not know the name of the person and if the situation in that is in just context में आप लिखें letter, if that is serious and that involves work, then it will be a formal letter. Okay, you have recently started work in a new company. Write a letter to an English speaking friend. In your letter, explain why you changed jobs, describe your new job, tell him or her your other news like family and everything. So what do you think this will be? सेमी फॉर्मल This will be what? You have this recently started in a new company. Formal, sir. देखिए मैंने So, क्या, just a second, sir. Just a second. You have recently started working in a new company. I write a letter वहाँ पे English speaking friend. Non-formal. oh, Because sorry, दोस्त what? का कर रहा हूँ. Informal, yeah. Non-formal. Informal. Informal. That's the right word. Informal. Yeah, it's informal. देखिए, एक चीज, I just want to remember one thing. Oftentimes we make mistakes because we're in a rush. Okay, so
you have to be very calm and composed, a very rational mindset, because you need to analyze the question first before you decide to pen your response. Yes, that is very important. You also note another thing in IELTS, how you read. Yeah, how you read is just as important as what you read. Okay, so since you're writing it to a friend and you're talking about job and other things, other things which be asked, how is he doing, how is his family, what are his plans for vacation, blah blah blah. Therefore, this comes in the category of informal letter. Okay. जैसे हमने कहा, the first and third questions are formal. We don't know the name of the managers and their formal situations. The second question was a semi-formal letter because you are writing to your manager. Many people are friends with the managers, but please disregard this. Please ignore this when you're writing IELTS letters. In this case, manager is the same as colleague or co-worker, and the letter will therefore be semi-formal. याद रखें, दोस्त एक होता है आपका personal acquaintance. Colleagues, co-workers, managers, they are not your friends. But ये कुछ जिंदगी की irony भी है, right? I mean, I always used to say to people, that university is pretty much the last place to make friends, afterwards, corporate sphere, you just have what you call, opportunists, temporary flavor seasons of the month, So anyways, the last letter is to a friend, just aapne correctly identify kiya, good job on that, and therefore it must be informal, okay? It's not non-formal, it is informal, okay? अच्छा, नेक्स्ट अब सबसे पहले हमने देख लिया रिजवान साहब के फॉर्मल लेटर को किस पैरामीटर्स के ऊपर इवैल्यूएट किया जाता है. We have looked at some examples of a formal letter to help you identify better as to how it is going to be a formal letter. अब आगे अब देखते हैं कि हमने formal letter को प्लान किस तरह करना है. ठीक है. People don't normally plan letters, but in the IELTS test you really should. In fact, I met very few students who wrote a band 9 letter and didn't make a plan about writing. So all task 1 questions on the general training paper follow the same format. They'll first tell you the situation, the reason why you're writing. अब कोई सी भी आपका letter हो, whether it is a formal letter, whether it is a semi-formal letter, whether it's an informal letter is one side, there will always be 4 dimensions to it. सबसे पहले वो आपको बताएंगे कि किस वजह, क्या वजह है जिसके पीछे आपने लेटर लिखने, क्या मकसद है आपके लेटर लिखने को. जी जनाब. तो सबसे पहले तो आपसे मकसद पूछेंगे. मकसद पूछने के बाद वो आपको 3 बुलेट पॉइंट्स देंगे जो आपने कवर करने हैं. ठीक है. उन 3 बुलेट पॉइंट्स को you have to include them in your answer. You have to take them into consideration. And this is good news for us. Why? Because it means कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा. हमें गिवन टेम्पलेट मिलेगी और हमने उस टेम्पलेट को फॉलो करना है. ठीक है. Because it means we can follow the same structure every time. अब वो क्या 3 पॉइंट्स होंगे, क्या रीजन होगा, आगे जाके जब हम एक क्वेश्चन करेंगे लेटर का तो हमें उसकी बेहतर समझ आएगी इंशाल्लाह. Next up, let's look at a structure. Okay, so we have talked about the plan, we have looked at examples and the parameters of identification of a formal letter. Now let's look at the structure of a formal letter, or what will be the contents of a formal letter. Okay, so a formal letter comprises of the following contents. सबसे पहले आता है आपका title. ठीक है. Title, khitab, right? That's the very first aspect. That's the very first dimension to your formal letter. Okay, so you always begin your formal letter as dear sir or madam. क्वेश्चन में आपको बताया भी जाएगा कि आपने किस तरह लेटर शुरू करना है. डियर सर या मैडम आपका गिवन होगा लेटर के अंदर. ठीक है सर. उसके बाद, like I said, there are 4 dimensions response up to your letter, right? Be it formal or informal or semi-formal. तो पहली चीज क्या होती है, वो आपको बताते हैं किस रीजन की वजह से आपने लेटर लिखना है. So paragraph 1 say why you are writing to them. Paragraph 1 say why you're writing to them. Tell them exactly. Just tell them I'm writing with regards to so and so, whatever the postulated scenario is that is given to you in your question paper. Okay. Paragraph 2, bullet point 1 and supporting details. Paragraph 3, bullet point 2 and supporting details. Paragraph 4, bullet point 3 and supporting details. उसके बाद आता है आपका एंड में आप क्या कहते हैं, वही बात है ना, पैराग्राफ 4 लेके ठप करके बंद नहीं करना, एक कंक्लूड, एक तरीके से कंक्लूड भी करना होता है लेटर को. अब वो स्टाइल नहीं होगा जो ऐसे का होगा, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट है लेटर को कंप्लीट करने का. वो ये है, आप कहते हैं I'm looking forward to hearing from you. I'm looking forward, जैसे पाकिस्तानी जब emails करते हैं, कहते हैं I'm looking forward to hearing from you. Thank you in anticipation and have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I mean, that's stuff that we say, right? So anyways, you don't do that. You can just simply say, I'm looking forward to hearing from you. In the end, you say yours faithfully. And below, you have to give your full name. Now, this is very important response. Okay, if you just write Rizwan or it's you're gonna have points deducted. Okay, formulated me, I have to give my full name. I can't just write Hamza, I can't just write Nasir. It has to be Mohammad, Hamza, Nasir. Okay, so in a formulated, this is what you do. Title, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4. I'm looking forward to hearing from you, yours faithfully, and then your full name, in my case, Mohammad, Hamza, Nasir.
So far so good. Is that understood? आसान है अभी तक? जी जी बेहतरीन हो गया, आगे चलते हैं. That's it. It will only take you a few minutes to write this out in the exam. And then all you have to do is think of the supporting details. When thinking of supporting details, don't worry about being entertaining or even thinking of the best ideas you can. Just make sure they're relevant. Because once again, letter is task one, और इसमें आपने ideally 250 से 300 वर्ड लिखने होते हैं, right? अब 250 से 300 वर्ड लिखने होने का क्या मतलब है कि देखें 10 वर्ड्स 2-3 वर्ड का टाइटल आ गया, 10 वर्ड्स का ये हो गया, 2 5 8 11 13 15 280 समथिंग ना, तो आपने 60-70 वर्ड्स पर पैराग्राफ आपने लिखने हैं. पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, which is like 4 to 5 lines. सर टोटल वर्ड कितना होगा 150? Yeah, 150. Sorry, my bad. Essay is 250. Essay is 250. Letter, I think, is going to be 150 words. Okay, so wait, but you don't really have a lot of words to play with. Okay, so in this case, you just need to make sure कि आप जो है simply answer करें जो चीज आपसे पूछी गई है, so you don't have to worry about being entertaining or thinking of the best ideas you can. Just make sure they are relevant. Okay. So that being said and done, let's look at some useful language that we need to factor into consideration when we are composing a formal letter, okay? So below is a selection of useful language for you to use in a formal letter. The phrases you choose will depend on the context of the question. Useful language includes the following. Useful language includes the following, okay? Number 1, beginning. Number 2, requests and suggestions. And number 3, ending. This is the hallmark of every letter that you're going to come across in your IELTS syllabus, Mr. Rizwan, okay? There's going to be a beginning. There's going to be a middle part where you're making some sort of a request, some sort of a proposal, some sort of a recommendation, some sort of a suggestion, okay? You're postulating something or the other, and finally you have an ending. जिस तरह मैंने फरमाया था कि आपके ऐसे में there are generally 3 dimensions or 3 components to it: introduction, body, and conclusion. ठीक है? Similarly, in a letter, okay, you have beginning, then you have a middle part where you make some sort of a request and suggestion, and that is subsequently followed by your ending. Alrighty? So, okay, अब हम बात करते हैं beginning. Okay? So, beginning. अब वही बात है ना, अब सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की थी अपना आपने टाइटल लिख दिया, टाइटल के बाद आपका पैराग्राफ 1 आता है ना, जिसमें आप बताते हैं कि आप किस मकसद, आपका मकसद क्या है लिखने का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट्स योर एजेंडा, राइट? तो आप कहते हैं, सो मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दे रहा हूँ कि किस तरह आप अपना बिगिनिंग जो है वो कर सकते हैं. जो पहला आपका पैराग्राफ होता है, आप इस तरह अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं टाइटल के बाद कि आई एम राइटिंग दिस लेटर विद रिगार्ड टू सो एंड सो, I'm writing to bring this to your attention. I'm writing to inform you that, or I'm writing to express my dissatisfaction with that particular product or that respective service. ठीक है? These are some templates के इस तरह आप अपने जो है लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं टाइटल के बाद. ठीक है? आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे लेटर्स को तो हम इसको इंशाल्लाह यूज भी करेंगे. ओके? उसके बाद आपका आता है रिक्वेस्ट एंड. अब लेट्स से कि आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, आपने कोई सजेशन करनी है, सो आप किस, सो हाउ कैन यू वर्ड दैट मिस्टर उस्मान? ओके, यू कैन से आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड, आई वुड लाइक यू टू डू सो एंड सो, I'm entitled to request that you so and so. I was wondering if it would be at all possible to this, or I would like to suggest that you do this. Okay? तो इस तरह आप request और suggestions कर सकते हैं. Similarly, जब आपके चारों पैराग्राफ्स हो गए, you've talked about the reason, you've talked about bullet point 1, bullet point 2, bullet point 3, and में आप क्या करते हैं? You close it, right? So what are the different ways in which you can compose your ending that looks very, what you call, good to the reader? It could be, I look forward to hearing from you. It could be, I look forward to receiving your response. I await your prompt service. I await your quick, punctilious professional service. I thank you for your consideration. Yeah, I thank you for your consideration. Please respond at the earliest convenience. Please respond at the earliest convenience. Okay. Right. So next up, IELTS letter writing checklist. Okay. So हमने थोड़े से pointers और tips मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन like I said, Rizwan sir, you need to have a checklist also. You need to have a game plan, okay, when you are dealing with this letter part of the IELTS writing syllabus. So आप जब भी general writing के task 1 question को answer कर रहे हैं, you should ask yourself the following questions. Yeah, you should ask yourself the following questions. Number 1, have you read and understood the instructions? जैसे वो चौथे केस में जो inform letter था, जो आपके शुरू में लग रहा था कि कि कुछ और है, right? Number 2,
Is it a formal letter or an informal letter? Most of the times, it's either formal or informal. Number 3, have you made a plan? Then, have you included both the reason for writing as well as the 3 bullet points? Have you supported each bullet point with the relevant details? Have you used an appropriate and professional language? Did you separate your letter into paragraphs? Are your ideas clear and easy to understand? They should not be vague or obscure, okay? Have you avoided copying the question? Yes, you need to paraphrase it. Have you varied your vocabulary? Have you checked your letter for grammatical errors and spelling mistakes? If you can answer all of these questions in an impressive manner, ये आपकी checklist होनी चाहिए जो आपको mentally अपने mind में process करनी पड़ती है, right? So if you can answer all of these questions in an impressive manner, you are well on your way to writing a good formal letter, okay? So उसके बाद, so far so good, right? Um, that being said and done, yeah, go ahead, Usman. Sir, I didn't understand the last one. You should yourself ask yourself. जो मैंने भी आपसे बात की, अच्छा, okay, what I said to you was कि ये जो 11 चेक पॉइंट्स मैंने आपको दिए चेकलिस्ट में, ये आपके फिंगरटिप्स पे होने चाहिए. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, आपने इस चेकलिस्ट को रिकॉल करना है और मेक श्योर करना है कि आपने इन सब पॉइंट्स को जस्टिफाई किया है. आप अगर इन सब पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे, द चांसेस आर वेरी हाई दैट यू गोना गेट अ गुड मैथ स्कोर, ओके? मतलब आपने फॉर एग्जांपल अगर लेटर कंप्लीट कर लिया, तो आपने देखना है कि क्या मैंने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी तो नहीं किया, क्या मैंने डिफरेंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी मैंने यूज की है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या वो आराम से समझ आ रहा है या एग्जामिनर को स्ट्रगल करना पड़ा उस चीज को समझने में, क्या मैंने पैराग्राफिंग की है, क्या मैंने प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज किया है, क्या मैंने हर बुलेट पॉइंट को एड्रेस किया, क्या मैंने रीजन दे दिया है, ठीक है ना, क्या मैंने आइडेंटिफाई किया कि लेटर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, क्या मैंने इंस्ट्रक्शंस देखी कितने वर्ड्स लिखने, ओके? So these are the things that you need to identify your mate and make sure that you process them, okay, once you've done the letter, okay? uh, उसके बाद आपका आता है बैंड 9 सैंपल फॉर्मल लेटर, ओके? अब एक क्वेश्चन है, ओके? On a recent holiday, you lost a valuable item. Fortunately, you have travel insurance to cover the cost of anything lost. Write a letter to the manager of your insurance company, जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई किया था कि ये एक फॉर्मल लेटर है. In your letter, first of all, describe the item you lost. Secondly, explain how you lost it. Thirdly, tell the insurance company what you would like them to do. Yes? Tell the insurance company what you would like them to do. Now, I'm going to reshare the link with you. Time खत्म हो रहा है 10 minutes के बाद फिर हम इसको discuss करते हैं. Thank you.